मैं डॉक्टर एम वली सर गंगाराम हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट हूँ मेडिसिन का एंड आई एम फिजिशियन टू दी थ्री प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया मिस्टर आर वेंकटरमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा एंड प्रणब मुखर्जी. So I have seen and we are hearing news also. These days, a lot of sudden deaths are taking place, especially in young individuals who are otherwise healthy. Very recently, we have heard that actress Sushmita Sen has a heart attack, who was a gym goer and healthy person and apparently healthy looking person. And we suddenly lost one of our very senior cardiologist, Dr. Mohan Nair, who was in 50s and who also got sudden cardiac arrest during sleep and he died. Previously, we have had sudden deaths in many individuals like Puneet Rajkumar, actor in Kandar Cinema, collapsed after a morning workout and he died within 1 hour. देयर आर मेनी केसेस जो हमने देखे स्टेज परफॉर्म कर रहे थे ड्यूरिंग द दशहरा पीरियड एंड वन पर्सन वाज प्लेइंग द रोल ऑफ लॉर्ड शिवा and he collapsed. People thought his part of role is that he is bending down. Then many singers have been seen dying on the stage, and Siddharth Shukla, one of the anchors of Aaj Tak, Puneet Rajkumar, I have already mentioned, and film director Raj Kaushal died at the age of 49. These are examples which are worrisome. During COVID also, we have lost many patients, and one very famous footballer of Mohan Bagan, Radha Krishnan Dhananjayan, and Demar Hamlin also died in US playing football. He did hit his chest. Ball hit his chest. यानी फुटबॉल खेलते हुए चेस्ट पे लगी और धड़ाम से इंजरी हुई और वो कोलैप्स हो गया और फिर वो जिंदा नहीं बच पाए. राज कौशल साहब थे, अभी मैंने नाम लिया उनका. तो इस तरह के हमारे पास करीब इस वक्त 50 नाम हैं जिसमें हम कंपनीज के एग्जीक्यूटिव्स को भी इंक्लूड करते हैं जो रेगुलर एक्सरसाइज पे जा रहे थे, वॉक कर रहे थे. कहने का मतलब यह है कि सडन डेथ की जो कहानी है वो अब दोबारा से शुरू हुई है और इंडिया में ये देखा जा रहा है कि सडन कार्डियक डेथ जो है विदेशों के मुकाबले में 10 साल पहले हो रही हैं. तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, ये सब हम मेडिकल फ्रेटर्निटी, डॉक्टर कम्युनिटी और साइंटिस्ट सब चिंतित हैं. शुरू में लोग ये सोच रहे थे कि कोविड के वैक्सीन से हुआ है. नहीं, वैक्सीन तो देखिए करोड़ों लोगों को लगा है, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं हो रहा है. तो ये कहना तो अभी सही नहीं है कि वैक्सीन का साइड इफेक्ट है, लेकिन ये कोविड का साइड इफेक्ट है. कोविड जो है उसने बहुत सी चीजें हमारी बॉडी में धराशायी कर दी हैं, जिसमें से एक होता है हीमियोस्टैटिक सिस्टम. और कोविड की दोनों तरह की कॉम्प्लिकेशन देखने में आ रहे हैं और शुरू में भी आए थे जो हम लोग नहीं समझ पाए थे. तो इसमें क्लॉटिंग का जो मैकेनिज्म है वो खराब हो जाता है, बॉडी का क्लॉट हो जाते हैं ब्लड में. स्ट्रोक भी हुए उसकी वजह से, सडन डेथ भी हुई है, सडन हार्ट अटैक्स भी हुए हैं, लोगों के हाथों पैरों में भी गैंग्रीन हुई है और वो उनको काटा गया है. लंग्स में भी क्लॉट गए हैं. इसी तरह से ब्लीडिंग्स हुई है, बहुत ज्यादा लोगों को ब्लीडिंग हुई है, लेकिन क्लॉटिंग ज्यादा हुई है. तो ये हम ये कह सकते हैं कि कोविड ने हमारे शरीर का जो मैकेनिज्म है उसको खराब किया है. और अब हम इसके जो कार्डियोलॉजी की एस्पेक्ट है, जो परिभाषा है, उस पर आना चाहेंगे. तो परिभाषा है, बाय डेफिनिशन प्रीमेच्योर कोरोनरी आर्टरी डिजीज अकर्स एट यंग एज. दैट्स नंबर 1 पॉइंट. less than 55 years in men and less than 65 years in women. And as I told you, many studies have now proven that CAD in Indians happens at younger age. Now the big question is why Indians are more prone, more vulnerable. Indians में क्यों ज्यादा होती है. और डे बाय डे इसके इंसिडेंस बढ़ रहा है, इसके नंबर्स बढ़ रहे हैं. तो वन शुड बी अवेयर ऑफ द फैमिली हिस्ट्री,
एंड व्हाट इज द रीजन। कुछ लोगों में हम ये भी देख रहे हैं कि अच्छे खासे जो एथलीट्स हैं उनमें भी सडन डेथ हो रही है। एक हमको जब हम पढ़ते थे तो एक पढ़ाया जाता था एथलीट्स हार्ट। एथलीट्स हार्ट का मतलब होता है कि हार्ट का जो दल है, जो उसके मसल्स हैं, वो ज्यादा मोटे और भारी हो गए हैं, तो उसकी वजह से उसकी ब्लड रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। कहीं कहीं इसमें जो आउटफ्लो ट्रैक्ट होता है उसको नैरोइंग हो जाती है उसमें। सो दैट इज कॉल्ड ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी और हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। सो दैट इज ऑल्सो वन रीजन ऑफ सडन कार्डियक डेथ। नाउ, हार्ट अटैक में और सडन कार्डियक डेथ में फर्क जानना बहुत जरूरी है। हाउ वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन सडन कार्डियक डेथ एंड हार्ट अटैक कॉजिंग डेथ। When heart attack occurs, it is because of coronary artery obstruction, coronary atherosclerosis. So it gives us time. First, the patient has chest pain, then patient will come as anginal pain, what we call as cardiac chest pain, angina pectoris. Identify this pain, how pain is left side of the arm, left side of the chest. Sometimes it may radiate to the neck. There may be sweating. There may be darkness in front of eyes. One can feel unstable, one can fall, and blood pressure may also fall. So, this is a typical heart attack in which we take the patient. Uh, in advanced centers, we rush the patient to cath lab, we do angiography, and we put stent or do bypass operation. This gives us time. Maybe this gives us 6 to 8 hours or more, or we can do this. Ideally, we should move the patient within 8 hours to the cath lab for treatment. Now, sudden cardiac death is very different from this, in which the heart starts beating very fast. Sometimes it fibrillates. That's the right word. के heart की जो rate है, ECG अगर हम करें तो उसमें 200, 250, 400 तक भी आएगी। या एक अजीब किस्म का एरिथमिया आएगा जिसको हम वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया कहते हैं या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कहते हैं। उस केस में हमको हमारे पास 4-6 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं होता। पेशेंट को जब हम सही समय पर सीपीआर देंगे या हम अगर हमारे पास सुविधा है तो डिफिब्रिलेटर से उसको हम करंट देंगे और हार्ट को जो इरेगुलर उसकी बीट है उसको रेगुलेट करेंगे, तो फिर हमको उसमें फायदा हो सकता है, पेशेंट को फायदा हो सकता है। लेकिन ऐसे केस में डायग्नोसिस होना और पेशेंट अगर ड्राइव कर रहा है या पेशेंट कहीं खेल रहे हैं या वहां पर मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, ऐसी जगह पर हैं, मार्केट कॉम्प्लेक्स में, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में हैं, या घर पर सो रहे हैं, सोते सोते भी हो सकता है ये, तो ऐसी कंडीशन में ये सुविधा पेशेंट तक नहीं पहुंच पाती है और पेशेंट सुबह को डेड। मैंने भी अभी अपने सीनियर डॉक्टर का जिक्र किया जो मोहन नायर साहब थे, उनको सोते हुए, वो बिल्कुल ठीक थे, हेल्दी थे, सोते हुए ये हुआ और सुबह को वो डेड पाए गए। कारण का पता भी नहीं लग पाया, बट दिस वाज ए केस ऑफ मोस्ट लाइकली सडन कार्डियक डेथ। अब इसको कैसे पहचाना जाए और ये क्या हमको कुछ अलार्म्स देता है? यस, इट गिव्स अलार्म्स। कभी जैसे टॉपिक बीट्स फील हो जाएं या थकान जल्दी हो जाए, चेस्ट में कंजेशन हो जाए, खांसी आने लगे, छाती में दर्द रहे और वो ठीक हो जाता है, तो ऐसे केसेस में हमको अपना ब्लड प्रेशर और एक ईसीजी जरूर करवाना चाहिए, ये देखने के लिए कि अंदर सब चीज ठीक है या नहीं। अगर हम इन सिग्नल्स को इग्नोर करते हैं, घबराहट को इग्नोर करते हैं, तो फिर ये बड़ी शक्ल में सडन कार्डियक डेथ की तरह सामने आता है और ये फैटल होता है, इसका कोई इलाज नहीं होता। दूसरे जो हार्ट अटैक के लक्षण हैं वो भी कुछ ऐसे ही मिलते जुलते होते हैं, जिसमें पसीना आता है, चेस्ट पेन होता है और बाईं तरफ छाती के दर्द होता है, जबड़े की तरफ जाता है। और इस तरह से हम पहचान सकते हैं कि ये हार्ट डिजीज की वजह से है। ऐसे लोगों में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है या वो डायबिटिक होते हैं या वो हाइपरटेंसिव होते हैं, उनकी हिस्ट्री होती है, फैमिली हिस्ट्री भी होती है।
एक अमेरिकन रिसर्च के हिसाब से ये देखा गया है कि सडन कार्डियक डेथ में 13% का इजाफा हुआ है। इन देयर इज ए 13% इंक्रीज इन सडन कार्डियक अरेस्ट among those aged between 30 and 40. This is a surprise, this is an alarm. And as per Indian Heart Association, when the heart disease strikes Indians, it tends to do so at an earlier age than other countries, other demographies, and it occurs without warning. So, few studies have found that Indians suffer from heart disease at least 10 years younger, जैसे कि मैंने शुरू में कहा था, और incidence of sudden cardiac death among youngsters is rising, and there are some reasons other than what I have mentioned. These reasons are obesity. We just had World Obesity Day on 4th of this month. Consumption of alcohol in big quantities, smoking, and one of the most important reason is stress. There can be hypertension and diabetes associated with that. But some do not have all these factors and they have sudden cardiac attack or sudden cardiac death. So we have to create public awareness amongst masses. We have lost many people during recent past, especially after COVID. Globally, if we see total cardiovascular disease deaths, they have risen 25% since 2000. And 32% of all global deaths, that is 1.79 crore, are because of cardiovascular deaths, and 85% were due to sudden heart attack out of these deaths. We have found, as per Indian studies, also the various percentages in various states. But Haryana and Delhi have highest percentage recorded, that is 34 and 28%. The heart disease is on rise. There is no doubt about it. And we first had infectious diseases. Now we have more of lifestyle diseases, and this stops in the damage producing lifestyle diseases. Even in a sports person or those who are healthy, we might have heard Cristiano Jr., this 25-year-old Brazilian footballer, collapsed at Karnataka Stadium playing football Federation Cup in a match and died. So why there are more deaths? I have one reason I have explained, that it is because of the lifestyle changes. I have enumerated various reasons beyond that. But there is something is happening after COVID, which we fully have not understood, but partly we have understood. And in that, we say that it is because of the damage to the heart after COVID, damage to the myocardium especially, and myocardium and also conduction system. So that gives rise to sudden cardiac death. The phenomena of hitting of the chest I have just now told is called concussocardie. Concussocardie means cardiac concussion. That is like we have a head injury by the cricket ball and we have a hematoma. Similarly, when we hurt the heart area, especially the lower part of the heart area, there is sudden either arrhythmia or a cardiac condition which puts the heart into cardiac arrest. So that happens. Also, we have young coronary artery disease, which goes undetected for many years. And it happens without warning. Sudden cardiac death happens without warning, bringing heart to a standstill. It occurs because of erratic heartbeats. I have explained you this could be either ventricular fibrillation or ventricular tachycardia. These are the technical terms. For a common man, we have to know that heart goes mad. It fibrillates, small twitchings, and does not pump the blood to the body, and brain stops going to the brain. So the brain receives no blood supply. The blood stops going to the brain, and blood, if 3 minutes is the critical time, if the blood does not go to the brain, it does not carry oxygen to the brain. So the normal human heart beats between 60 to 100.
If it is less than that number, we call it bradycardia, and more or extremely high, then we call it tachycardia. We have classified this tachycardia into ventricular tachycardias, which are fatal. And these people who die suddenly, they develop the ventricular tachycardia or ventricular fibrillation. So common symptoms, if we are asked to summarize, is chest pain, dizziness, fever also in some cases, and nausea. And common associated diseases are hypertension, diabetes, and dyslipidemia, that is increased cholesterol. Now a word about blood pressure. Neglected and unsupervised high blood pressure is associated with 6 to 8 times chances of dying more with sudden cardiac arrest. So we can very simply get our blood pressure checked, especially at the college going age, boys should get their blood pressure checked. Of course, girls also. And then once at the age of 25, and then regularly at the age of 2 years. Every interval of 2 years, we should get the blood pressure checked. Sir, sorry to interrupt, but we are remaining time is 3 minutes only. So now summing up what is to be required. The precautionary measures to be taken is to stay at the top of your health. You should start following healthier lifestyle. The youngsters should be told to stop junk food habits, sleep peacefully, to fight the stress. How you can fight the stress is by yoga, pranayam, having a sleep cycle which is normal. Don't wake up all night. Don't see too much of screen. Screen means computer and phone. Healthy regime of diet that includes eating a nutrition rich and balanced diet. Regular exercise. Here is a word of caution. We should not do much of running, unguided, unsupervised running, but we should do weight training. We should do all the exercises which are within the gym, static exercises. Refrain from smoking, drugs, alcohol, and get your blood pressure checked. So if we do these basic things, and especially for those who have a family history, then these are the necessary precautionary elementary measures. And once in a year, we should go to a heart doctor and consult him, get the blood pressure check. The government is also doing big job in this direction, and the universal health coverage has proposed by the central government. It includes the care for cardiovascular diseases and not as a non-communicable disease, tobacco taxation, salt reduction in processed foods, and the hypertension treatment are all cost-effective policies that will reduce CVD. The government is taking necessary steps to mitigate the burden of sudden cardiac death. Thank you.